everyone, and welcome to thorough newspaper analysis, which is brought to you by LawSikho. Let's see which articles we will be discussing today. So basically, कल क्योंकि हमारा as we already discussed, it was a landmark day of 5th of August. So जो राम जन्मभूमि पे जो temple construction था, उसका सबसे पहला जो इसको start कर दिया गया है कल. So more or less the articles were just discussing about it, and that like for the exam point of view is not an important issue for us because it is more of a religious and political issue. So yes, we should skip it. And thus, there is this one article from the Hindu, which is a very beautiful article because then again, it also marks an anniversary to a very important day, which was the nuclear bombing of Hiroshima. So this is the heading is taking nuclear vulnerabilities seriously. So this is from the Hindu, and it is a very nicely written article. And ये बहुत एक important topic की तरफ हमारा ध्यान जो है खींचता है because when we're talking about world security, world cooperation, global to say cooperation, then it is also very important that we take care the aspect of global security. So we'll be discussing about that in this article. Then the second one is news and flash column, which is LawSikho's own initiative, wherein we will be discussing the pointer news that is important for our prelims exam. Before that, let's have a look at the test prep courses that we have for you at LawSikho. So at the center, we have a lot of the courses, which is the judiciary test prep course, and you can go and visit the landing page wherein you can download this free study material for yourself and you can get it into your mailbox right in there. Then we have other test prep courses as well. They can anytime be viewed on the LawSikho website. So देख लेते हैं कि आज का MCQ क्या है, depending upon the discussion that we will be doing today. तो क्या है question आज के लिए? Which of the following countries does not have the Mediterranean Sea at its borders? It is meant to be at its borders. So इनमें से कौन सी countries Mediterranean Sea से border share नहीं करती या किस country के border पे Mediterranean Sea fall नहीं करती है? So first Iraq, second Turkey, third Lebanon, or fourth Syria. So here is the descriptive question for you. In the world order, something that needs utmost attention is the rapidly growing nuclear capacities of various nations. What can be the negative implications of an unchecked nuclear power? Discuss. So the answer to this question has to be written within a word limit of 250 to maximum 300 words, जो बहुत easily आप comment section में लिख सकते हो. And since answer writing is a very important practice when it comes to the exam, so it is advisable कि आप वो answer लिखो, and LawSikho will definitely give a review to that answer. So quickly हम start करते हैं अपने discussion को, which talks about the nuclear weapons and the deterrence. So basically we know what nuclear weapons are, and deterrence basically होता है कि किस हद तक हम उसके use को रोक पाते हैं. So और वो कितना ज़्यादा कह सकते हैं efficient है वो deterrence या नहीं. So today is the 75th anniversary of the nuclear bombing in Hiroshima and Nagasaki in Japan, which was on 6th and 9th of August 1945. So it was on 6th of August 1945 when US had bombed Hiroshima on 6th of August with the nuclear bomb, and then on 9th the Nagasaki. So these were the two cities of Japan which were totally devastated. ये cities एक तरीके से पूरी तरह बर्बाद हो गए थे after this nuclear bomb was to say planted, or it was put down by the United States of America in 1945. So over 2 lakh people were dead and another 2 lakh underwent mental trauma, and these people are generally known as the hibakusha. So basically in इस nuclear bomb की वजह से 2 लाख के आसपास लोगों की तो immediately death हो गई थी, and another 2 लाख जो लोग थे वो अभी तक भी, and trust me, the thing is that जो अभी तक भी impact है उस nuclear bombing का, वो अभी भी वहाँ की कई सारे generations में या जिन generations ने वहाँ पे उसको prevail कर लिया था, वो जो survive कर गए थे, उनमें अभी भी उसका effect देखने को मिलता है, and those people are known as the hibakusha. So this should also be kept in mind that who do we refer as the hibakusha. So these were the people basically who underwent the mental trauma due to the Hiroshima and Nagasaki bombing. Let's see that what data do we have available on the nuclear weapons. Since 1945, 9 countries, the US, Soviet Union, Russia, which is now present-day Russia, UK, which is with the England or United Kingdom, France, China, Israel, India, Pakistan, and North Korea have armed themselves. So we can see कि इतनी ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं एक impact देखने को मिला हिरोशिमा और नागासाकी nuclear bombing की वजह से, and even after that 9 countries, including our very own country, India, since 1945, 9 countries have developed or they have equipped themselves with the nuclear bomb. So they have the nuclear weapons. And over
126,000 nuclear weapons have been built since the atomic age, and over 2,000 have been tested above, tested above and below ground, causing long-lasting damage to the environment and public health. Because, but obviously, जब भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर इक्विपमेंट या इस तरह का कोई भी एटॉमिक चीज डेवलप होती है, तो obviously उसको हम टेस्ट करते हैं. जैसे इंडिया की वेरी फेमस पोखरान जो हमारी टेस्टिंग थी. सो जब उनको हम टेस्ट करते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट है उस पूरे एरिया में, अब चाहे वो अंडरग्राउंड हो तो उसके पूरे ग्राउंड में, क्वालिटी ऑफ सॉइल में, वहाँ की वाटर रिसोर्सेज में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में, उसके जो वो जिसको कह सकते हैं हम, जो कुछ पार्टिकल्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो रह जाते हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन एंड अदर नेचर. सो इसीलिए इन्होंने ये बता रहे हैं, वी स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस, एंड ऑल्सो इन्वेंशन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स इन 1950s मेड इट पॉसिबल टू इंटरसेप्ट वेपन्स वंस लॉन्च्ड. सो बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि एक बार वो जब लॉन्च हो जाती है तो वो लॉन्च तो एक रोबस्ट स्पीड के साथ होती है, बट उसके बाद यूजिंग द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ वो अपने पूरे प्रॉपर टारगेट पे जाके गिर जाती है, विच इज लाइक in a way it is impossible, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी इस तरह का कोई भी टेक्निक डेवलप नहीं हुई है कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आपकी तरफ आ रही है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो कोई भी न्यूक्लियर उसमें जो है एजेंट है और वो आपके तरफ आ रही है, तो यू कांट रियली टेक्निकली स्टॉप दैट बैलिस्टिक मिसाइल और कैन नॉट रियली चेंज द कोर्स. आप उसका रास्ता भी नहीं बदल सकते और आपको उसके टारगेट पे आप उसको गिरने से रोक भी नहीं सकते. सो इसकी वजह से क्या है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज जो है वो बहुत ज्यादा, जिसको कह सकते हैं, डेंजरस माना गया है, because it cannot really be stopped once started. Then why deterrence cannot be a justification for the use of nuclear weapons? Now, first of all, we need to know that according to SIPRI, which is the Stockholm International Peace and Research Institute, so उनके according past कुछ सालों में India, China और Pakistan, being the neighbors of one another, they have been dramatically increasing the capacities of their nuclear weapons, या फिर nuclear जो armory है वो हम अपनी बढ़ा रहे हैं. All the three nations, be it India alone or even be it the China or Pakistan. So this can actually show कि एक तरफ जहां हम पीस की बात करते हैं, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, वहीं पे हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. सो लेट्स सी दैट व्हाई डेटरेंस, जिसको हम कहते हैं कि हम रोक सकते हैं न्यूक्लियर पावर को, तो वो क्यों जस्टिफाइड नहीं है, हाउ इट इज नॉट रियली पॉसिबल, बिकॉज न्यूक्लियर थ्रेट्स प्रोड्यूस एंगर एंड एस्केलेट सिचुएशंस. सो इट वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. फिडेल कैस्ट्रो का जो रोल था, एक्चुअली बेसिकली हुआ क्या था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जब कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और यूएस के बीच में, तो उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट कोल्ड वॉर ओनली कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे या कुछ न्यूक्लियर जो कह सकते हैं इक्विपमेंट्स थे जो रशिया को बिलोंग करते थे, बट वो क्यूबा जो आइलैंड है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू टू यूएस, जो नॉर्थ अमेरिका है उसी के बिल्कुल सर्दर्न पार्ट में क्यूबन आइलैंड है. सो वहां पे वो कुछ जो थे इक्विपमेंट्स पाए गए थे, एंड देयर वाज दिस पर्सन फिडेल कैस्ट्रो, एक्चुअली he was the one जिसने इसको पॉसिबल करवाया था, बिकॉज ऐसे टाइम पे it was not really possible for Russia to move so close to US, but yes there were situations जिनकी वजह से फिडेल कैस्ट्रो एस्केलेट हुए एंड उन्होंने ये पॉसिबल होने दिया, दो अर्लियर उसका यूज नहीं हो पाया था, बट देन अगेन इट इज अ वेरी हिस्टोरिक इवेंट बिटवीन द टू कंट्रीज वेयर न्यूक्लियर वॉर इतनी पास आ गई थी, बट थैंकफुली इट जस्ट समहाउ गॉट to say it never happened. So nuclear powers have gone into war quite often. So it is not like a situation that nuclear powers, they have never been into war. Like for example, India और Pakistan का example ले सकते हैं, India China का example ले सकते हैं. So India has been in a state of war with both of them at some point or the other. और तीनों ही जो है वो एक तरीके से nuclear weapon powers हैं. So ऐसा नहीं है that they do not get into war. So if situations worsen, so there might be a case that they might to say resort to nuclear war. Deterrence cannot be considered stable because, but obviously it is very subjective and इसको कोई guarantee लेके नहीं चल सकते हैं हम. So all nuclear states admit that deterrence could fail because all of them say कि जितने भी efforts हम लगा रहे हैं nuclear weapon को use ना करने के लिए through various treaties or anything like that, so that deterrence जो है उसका कोई भी guarantee नहीं है कि वो 100% काम करेगा ही. So the goal, the wish really might be to prevent nuclear war, but the operational plan had to be wage war. So it was said by General Lee Butler. So the controllability of nuclear weapons is very very difficult. In a way, it is just impossible. एक बार अगर किसी country ने nuclear weapon launch कर दिया, it is technically impossible for the other country or maybe even for the same country to just stop that nuclear weapon from exploding or giving its effect.
So it is not possible to have complete control, but the desire to achieve perfect controllability creates overconfidence, which is dangerous. So that is why it should be kept in mind. And thus, the use of nuclear weapons or even proliferation of nuclear weapons is very should be done very carefully. With this, let's get into the news and flash section. Bomb blast in Beirut. On Tuesday, a devastating blast in central Beirut, Lebanon, killed 135 people and wounded 4,000. So just on Tuesday, like 2 days just before, एक बहुत ज़्यादा immense blast जो है वो देखने मिला है लेबनान में. So the capital of Lebanon is Beirut. तो बेरूत में ही वहाँ पे जो उनका जो शिप यार्ड था, डॉक यार्ड था, उस एरिया में बहुत ज्यादा एक जो ब्लास्ट देखने मिला है. So एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2,700 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट वो स्टोर्ड, और कहते हैं कि वहाँ ही आसपास कुछ क्रैकर्स थे, एंड ड्यू टू बर्निंग ऑफ दोस क्रैकर्स, वन ऑफ दोस क्रैकर्स वेंट इनटू दिस कंपाइलेशन, और उसकी वजह से इतना सीवियर ब्लास्ट देखने को मिला है. So in recent years, it has been battling with one or the other crisis and another. So यहाँ पे this is the point of importance कि Lebanon किस तरीके के crisis जो है वो face कर रहा है. Like just a few days back, we discussed about the Syrian and Palestinian crisis regarding the Gaza Patti and various other things which we were discussing. So कई सारे refugees जो हैं, they have moved from Syria to Lebanon, और उनका भी बहुत तरीके से एक burden, एक responsibility Lebanon के ऊपर है. So they are into complete political instability, then a crumbling economy, and even the pandemic has definitely hit everybody hard. So this will be all for the day. We hope it was an informative session for you. Consider subscribing to this channel in order you do not miss any important update. But yes, it's like something that we really come up with good stuff all the time. So just stay tuned with LawSikho for such more sessions every day. Thank you so much.